I'll start. Hello, everyone. Assalamu alaikum. Welcome to the 10th session of the HIV Awareness, Prevention and Education Project in Pakistan, designed and led by Apna Merit HIV Committee. Our project aims to reduce HIV stigma, increase HIV awareness, and knowledge about the disease among the healthcare workers and communities in Pakistan using educational and research tools. Please note this is a volunteer academic activity and all views expressed here are speakers' personal views and they are not representing any institution. Our moderator for today's sessions are Dr. Saima Abbas and Dr. Hamad Ali. Dr. Saima Abbas is an ID physician located in Florida, USA. She graduated from Fatma Jinnah Medical College and completed her internal medicine residency and infectious diseases fellowship at University of Toledo, Ohio. She is a co-chair of Apna Merit HIV Committee. And Dr. Hamad Ali is a medical epidemiologist currently working in the United States. He did his MBBS from King Edward Medical College and his PhD from University of New South Wales in Australia. From last many years, his work has focused on HIV in developing countries. In 2019, he worked as a part of the WHO team that investigated and responded to the HIV outbreak in children in Larkana. So now I hand it over to Saima and Hamad. Thank you, both of you. Assalamu alaikum. Let me share my screen. Can you all see this? Yes. We can. Chale. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. On behalf of Apna Merit HIV Committee, I welcome you all to this 10th webinar in our series. The title today is HIV in Key Populations, Part 1. So, usually we take one quote from our previous webinars to answer the simple question, why are we here today? So this is from our first webinar, Myths and Facts. This was by Dr. Bushra Jameel, who laid out the landscape and the statistics in Pakistan, which were quite eye-opening for us. So since the 1980s, up until now, Pakistan has moved from low prevalence, high-risk country to a concentrated epidemic, which means that the prevalence is more than 5% in certain key populations. What this basically means is that at that time, in 2016, it was assumed that HIV was spreading in concentrated hotspots in key populations and was more than 5% at that time. What is important to note now is that since then, Pakistan is moving from a concentrated epidemic in key populations to a generalized epidemic because HIV is now spreading for multiple different reasons in the general public. But because we are focusing on key populations today, this was an important quote. If you move forward and look at who are the key populations, according to estimates in 2016 to 2017, almost 40%, so 38.4% cases were found in people who inject drugs. So this is the largest key population in Pakistan. 7.2% in transgenders, and 5.6% among men who have sex with men. Now, Pakistan is not alone. This is a problem in the USA as well. So I thought it would be important to share this contrast. So in USA, gay and bisexual men of all races and ethnicities remain the group which is most severely and disproportionately affected by the HIV epidemic. So the MSM population, which is men who have sex with men,
is 2% in the US, but 61% of all new infections in 2009 were reported in MSMs. IV drug users are not the largest in the US, and they represent 9% of new HIV infections. Transgender individuals are also heavily affected by HIV. The 2008 review suggested that 28% of the transgender individuals, especially HIV among male to female women, tested positive for HIV. So in Pakistan, this is the consolidated guidelines for prevention and treatment of HIV infection in Pakistan. And you can see this is what was the recommendation. In Pakistan, community-based organizations or community-based HIV testing and counseling for key populations should be prioritized and scaled up with linkages to prevention, care, and treatment services. HIV testing and counseling should include the partners of the key populations. Now, how can you scale up HIV testing and counseling without driving a public health campaign to facilitate testing and counseling? Therefore, this part one of our HIV talk in key populations starts with the whole barrier to testing, which is the stigma. And therefore, we have invited non-physicians, excluding Dr. Umair, who is a physician, but is on the front lines of the public health face of HIV, because without that aspect, you cannot make any headway and cannot remain in an illusion that you will have any control on key populations without addressing that. So the role of public health, and especially NGOs working with key populations, is to have peer outreach approaches and social network strategies to increase the effectiveness and the efficiency of case finding. And that is why in the world of COVID and dengue, when we are struck by all these viruses, we are now quite aware that when we have the will to take care of viral issues, there is always a way. So HIV in key populations, part one, basically is dealing with the public health aspect of key populations. I have outlined here which are the key populations: the MSMs, men who have sex with men, including male sex workers, female sex workers, transgender sex workers, and IV drug users. My first speaker is going to be Dr. Malik Muhammad Umair. He is an HIV treatment specialist with the National AIDS Control Program, Ministry of National Health Services, Regulation and Coordination in Islamabad. He is the founder of the first virtual platform of the Pakistan Public Health Forum and has been a part of public health since 1999. He has a 30-year experience as a physician and 15 years of service in public health. He is also involved and has been involved in the healthcare teams in Islamic Relief Saudi Arabia, Care International USA, and Concern Worldwide, which was a Dublin-based organization. So his contribution is paramount to our talk today. So go ahead, Dr. Umair. Thank you very much. Let me share my slides. Should I stop my video? I think you can continue your video, but right. Your screen. I'm just sharing my slides. I hope it is now. Can you see my slides now? Yes. But perfect. Because the time constraint, I will be very quick in my few slides, and those who need detail, I will elaborate. I will start with the verses of Holy Quran, which I found very effective in my every presentation. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
These are one of the best verses I've seen for after Rabbi Zidima. Ey Allah, mere Rab, mere liye mera सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे, कि वो मेरी बात समझे. All the aspects of communication are catered in these beautiful verses. First of all, I want to acknowledge the EPNA merit to giving me this opportunity. I feel honored, and I'm dedicating all my. I will be bilingual if no foreigners are here. I'm acknowledging all the HIV community in Pakistan, most marginalized, most stigmatized, and all the staff who are working in any capacity as counselors or case managers or physicians or nurses or data entry operators in my all treatment centers, CBOs, COPC sites of Nayi Zindagi, my national staff of AIDS control program, and all provincial staffs. I want to dedicate today's present to my sister, Professor Dr. Saima Saab, who is instrumental, and my all teachers and mentors, to my supervisor, Dr. Aisha Majid Isani in AIDS control program, Dr. Fiza Gilani, Dr. Saima, definitely from EPNA, Moon for her contribution in my presentation, Mr. Kazmi in FPAP, Tayyab Shah, who is also my co-presenter today, Noor Rafiq, and all UN agencies, especially Rajwal and Famida, who contributed a lot in today's presentation. The objectives of I will share some facts and data, but I will focus my presentation towards stigma, especially towards KPs and focusing the TG's population. We need to understand, unfold what stigma is, how it can affect the treatment, how it can affect our behaviors, and what are the environment where we can minimize stigma, and what are the impacts of stigma in the lives of TGs and key population. Well, I will talk a little about the double stigma, once about as a KP, and when the key population are HIV positive, how they are treated in hospitals, in the society. My focus is more towards hospital, not towards the society, but similarly, we have a lot of new infections, but why the stigma is too much in HIV? I will try to answer this question also. And what is the difference between the prick exposure to HIV to Hep B and Hep C, where Pakistan is on the top of few countries in the world? I'm trying to, I will try to unfold the word empathy for the TGs, the role of the bridging population, how the HIV positive population is spreading the HIV to their spouses. All the migrants are bringing the HIV and giving it to their wives, and then from wives to their kids. How we are so much judgmental. We always relate HIV to the bad character, which is actually hampering the services towards this key population. What happened in Ratodero? I've put the link how in Ratodero a husband killed her wife when she was declared HIV positive, and she was hanged. I've put the link here. And we always think the HIV is immoral, whereas the Ratodero outbreak has clearly shown it is the injection safety issues. There are many, many different causes. It's a very diverse area to work in. And what is the way forward? I will try to discuss what the PrEP, especially for the key population, how stigma, taboo, and discriminations are different. We have already discussed about who are KPs, and then I want to show this कि जो हमें स्टिग्मा हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा की, डिस्क्रिमिनेशन की, टैबूज की, वो इस आइसबर्ग में जो हम अक्सर दिखाता हूँ अपनी हर स्लाइड में, वो बहुत थोड़ा है जो हम बात कर रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है. इससे बहुत ज्यादा स्टिग्मा है. एंड जस्ट आई ऑलवेज पुट दिस स्लाइड में एवरी प्रेजेंटेशन कि आपको अंदाजा नहीं है कि माशरा कैसे देखता है एक टीजी को और एक आईडीयू को, और एक माशरा कैसे उसे कबूल नहीं करता, और फिर अगर वो HIV पॉजिटिव हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं. ये कुछ इमर्जिंग इन्फेक्शंस हैं, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, क्लिनिशियंस हैं, कि कोविड के दौरान एसोसिएटेड इबोला भी आ रहा है, मीजल्स की भी रिकरेंस है, स्वाइन फ्लू भी चल रहा था, चिकनगुनिया आ गया. बट जो स्टिग्मा जो है HIV के साथ रहा है ओवर द इयर्स और जो रहेगा और अभी भी है, दैट इज अनइमेजिनेबल. इस पर हम बात करेंगे क्यों. मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं 94 में एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में था, और वहां मैंने महसूस किया कि पेशेंट था. पहले तो मैंने ER में देखा पेशेंट,
उस पर मेरा अपना रिएक्शन क्या था, हाउ पैनिक आई वॉज कि पेशेंट, एक्साइटमेंट थी कि पेशेंट को एड्स है। और जब वो कोई और पेशेंट मेरा आईसीयू में हुआ तो हॉस्पिटल के जो कंसल्टेंट थे उन्होंने मना कर दिया मैनेजमेंट को टू स्टॉप हिज सन फॉर मैनेजिंग ड्यूटीज के एचआईवी के मरीज है। स्टाफ ने इनकार कर दिया। बैक इन 1994 व्हेन इट वाज वेरी अर्ली इन पाकिस्तान एंड दैट वाज माय फर्स्ट पेशेंट, स्टाफ ने इनकार कर दिया कि हम मरीज नहीं दिखेंगे, विदाउट नोइंगली कि उससे कितना रिस्क है स्टाफ को। मेरा अपना 99 से जो करियर पब्लिक हेल्थ में स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने तकरीबन मोर देन 80,000 पाकिस्तानीज की जो बाहर जाते थे उनकी एचआईवी स्क्रीनिंग की, एलाइजा भी की, अलॉन्ग विद एसटीआईज एंड हैप बी एंड हैप सी। उससे मुझे अंदाजा हुआ और एक्सपोजर फर्स्ट टाइम हुआ कि जब एचआईवी पॉजिटिव हो तो क्या बात करनी पड़ती है, उनको क्या, उनकी क्या रिपोर्केशंस होती हैं फैमिली के लिए और इंडिविजुअल के लिए। रिसेंटली कोई जुलाई में मुझे 2 माह के लिए मौका मिला टू बी द पार्ट ऑफ द क्लिनिकल टीम इन एचआईवी। हमारा जो फर्स्ट एचआईवी क्लिनिक है पाकिस्तान में वो पिम्स में है, which is catering about 4,000 HIV patients in the capital. तो जब मैंने वहाँ पर जो लोगों को HIV पॉजिटिव के बाद रोते हुए देखा और उसके बाद उनकी जॉब्स जाना और फिर डाइवर्स, वो जो सारे, और फिर टीजीज का वहाँ पे हॉस्पिटल में उस स्टिग्मा को फेस करना, तो ये 2 महीने जो थे ये मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है। बिकॉज प्रोग्राम में बैठ के हम लैपटॉप पे बैठ के फिगर्स, डेटा, पावर पॉइंट्स देख रहे होते हैं, जब तक उसमें ह्यूमन टच ना हो और इंसानियत ना हो वो तो उसकी रिसेंटली लास्ट 5-6 ईयर्स में 2 दफा मुझे मौका मिला। एक एचएमसी में एक एडमिशन था, टीजी को बुलेट वुंड लगा था और उसको सीएमओ ने भेज दिया पहले फीमेल वार्ड में, उस वार्ड के लोगों ने वापस करके उससे मेल वार्ड में भेज दिया। इस दौरान बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस द टीजी लॉस्ट हर लाइफ। इसी तरह एक कोहार्ट से एक PLHIV पेशेंट थी जो प्रेग्नेंट थी फुल टर्म, उसको सीजरियन चाहिए था, कोहार्ट से उसको रेफर किया गया कि हमारे पास सहूलत नहीं है क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा, और HMC भेजा गया और इस रेफरल के दौरान शी डाइड। मुझे बच्चे का स्टेटस नहीं पता। तो स्टिग्मा मैं खुद जाती तौर पे फेस करता रहा हूँ अपनी। जब मैंने HIV ज्वाइन किया तो बच्चों को बताना कि मैं HIV के लिए काम कर रहा हूँ एंड व्हाट इज HIV, तो वो बड़ा आसान था हमारे लिए क्योंकि हमारा CMU है, तो हमारा तो जी TB मलेरिया के यूनिट में मैं काम कर रहा हूँ। HIV को मैं हदफ कर देता था। खुद मेरा पर्सनल ये हम फील कर लें अपने अंदर। रिसेंटली जब मैं पिम्स में गया, आई वेंट टू सी माय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उनसे मैंने बात की कि मैं बात कर रहा हूँ HIV में, तो उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान में HIV के मरीज हैं? उनके 7 वाला क्लिनिक था HIV का और 4,000 मरीज है वहाँ पे। ये थोड़े से कोई लिंक्स हैं। अभी रिसेंटली कल मैंने खबर पढ़ी कि TG वॉज किल्ड इन चारसदा KP के। आपसे गुजारिश है कि ये लिंक डाल रहा हूँ। मैं बहुत फास्ट तो नहीं जा रहा, आई एम सॉरी, एनीबॉडी कैन रिस्पॉन्ड? नहीं, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू। अच्छा भाई, मैंने ये लिंक डाल दिया। शोएब मंसूर पाकिस्तान के एक आइकन है, प्रोड्यूसर 50-50 के खालिक, जुनैद जमशेद के खालिक। उनकी मूवी है बोल जो TG के गिर्द बनी गई है, बहुत सेंसिटाइज, तो बहुत खूबसूरत प्रोडक्शन है। पाकिस्तान का TG बिल है, उसको देखना चाहिए कि हाउ वी आर इवॉल्विंग एज अ सोसाइटी। और जो YouTube पे मुझे एक बहुत अच्छी एक FSW की एक मेरी वो मैंने लिंक डाल दी है, और मैं तैयब साहब से कल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मिली नहीं। CNN पे डॉक्यूमेंट्री आई हैव सीन, मैडम लुबना तैयब, the wife of the late wife of Tayyab Shah, who is our guest speaker today. She started the first school for kids in the red light area for FSW kids. पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। अल्लाह इस पे हम बात कर सकेंगे। थोड़ी सी फिगर्स की बात कर लीजिए। जो लास्ट सर्वे हुआ 2017 में पाकिस्तान में, वो कहता है 10,000 हैं, और मैंने इन फिगर्स को बड़ा अनफोल्ड करने की कोशिश की। ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड, क्योंकि मैंने कंपेयर किया। आप लिख रहे हैं इस्लामाबाद में 133 हैं, सिर्फ F10, F6, F8 के इशारों पे जो है ना आपको 500 मिल जाएंगे शाम को, और जो लोग सिग्नल्स पे ना उसके 10 टाइम्स ज्यादा जो हैं जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में इन्वॉल्व हैं। तो 133 इन इस्लामाबाद इज ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड। सिमिलरली पूरे फाटा में वो कह रहे हैं 27 हैं, पूरे KP पूरे बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं 109 है। क्वेटा में आपको आराम से 1000 मिल जाएंगे, पूरे बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो आई जस्ट वांट टू सेंसिटाइज के सेंसस के अंदर भी हम ग्रॉसली अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? आई डोंट, व्हाट आर द रीजंस? वन ऑफ द रीजन स्टिग्मा। मैंने कंपेयर किया इसको US के डेटा से। US में भी कोई क्रेडिबल डेटा अवेलेबल नहीं है इंटरेस्टिंगली,
जो हम हर चीज में टुवर्ड्स यूएस देखते हैं, तो यूएस भी स्ट्रगल कर रहा है टू काउंट टीजी पॉपुलेशन। उसमें उनकी कुछ स्टडीज मैंने देखी जो बताते हैं कि उनके अंदर टीजीज के अंदर 4 गुना ज्यादा गुर्बत है, 2 गुना ज्यादा बेरोजगारी है, और उनके अंदर जो बेघर डबल रेट है, आम आबादी से डबल है उनका रेट बेघर होने का। और इसी तरह तकरीबन 4 गुना ज्यादा टीजीज जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं HIV से, और तकरीबन 28% जो टीजीज हैं वो अपने हॉस्पिटल नहीं जाते बिकॉज ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये मैं यूएस की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की नहीं। और 41% यूएस के फिगर्स हैं कि उन्होंने कोशिश की कम से कम एक दफा खुदकुशी की बिकॉज ऑफ स्टिग्मा। ये मैंने आगे रेफरेंस डाल दिया है। ये भी यूएस की बात है कि यूएस के अंदर वो कहते हैं तकरीबन 1.25 लाख से 4.5 लाख की फिगर्स हैं, जिसको मैंने पाकिस्तान के ऊपर एक्सट्रपोलेट किया तो मुझे इस अगर हम नंबर्स को देख लें तो तकरीबन 1,70,000 हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा सेंसस कह रहा है 10,000, विच इज 17 टाइम्स अंडर रिपोर्टेड। सो हमें सबसे पहले अपनी टीजीज को और की पॉपुलेशन को काउंट करना है जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात, ये क्वेश्चंस डॉक्टर सामा ने पूछे थे विच वॉज वेरी रेलिवेंट, कि मुझे पता ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर टीजीज कितने हैं, तो मैं टीजीज के लिए क्या काम करूंगा। हमने बात की कि टीजीज, ये IBBS सर्वे कहता है कि टीजीज के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। टीजी सेक्स वर्कर्स के अंदर HIV जो है 7.5% है, टीजीज के अंदर 7.1% है, और उसकी वजह जो हमें पता है कि स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन है, ड्रग यूज भी उनके अंदर है, सेल्फ स्टीम लो है, और उसकी वजह से डाइवर्स, मर्डर और उनकी सारी की सारी जो जिंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, खासतौर पर डिनाइल टू हेल्थ सर्विसेज हैं। ये कंपैरिजन है पाकिस्तान की सारी पिछली सर्वेस की, 2005, 7, 8 और 11 की। इन चारों में नजर आ रहा है कि हम IDUs में तो 2011 में हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 36% पे, जो 38% है। लेकिन जो बाकी की पॉपुलेशन है, हम IDUs पे एक सेपरेट सेशन करेंगे इंशाल्लाह अपना के प्लेटफॉर्म से। करंटली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो रेड में है टीजीज में, आप देखें 7.2% पे हम चले गए हैं HIV में, जहां पर हमने स्टार्ट किया था 0.8%। 2005 में इट वाज लेस देन 1%, और हम 7 गुना पे बढ़े गए हैं। सिमिलरली 5.6 हमारा जो है MSM है, और तकरीबन 0 से हम शुरू हुए थे, तो अब हमारी FSW 2.2 है। हम 4 में से 3 पॉपुलेशन में कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक में चले गए हैं, जो डॉक्टर सामा ने बताया। Dr. Umair, sorry for interrupting. Just a kind reminder that we are more than halfway through the 20 minutes. Right. Thank you. जी, ये क्वेश्चन है कुछ डॉक्टर सामा के, आई वांट टू रिस्पॉन्ड। कुछ सवाल था कि क्या टेस्टिंग अवेलेबल है। पूरे पाकिस्तान में HIV की टेस्टिंग अवेलेबल है एट द CBO लेवल्स। सारे HIV क्लिनिक्स में हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तमाम ब्लड बैंक्स में गवर्नमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। प्राइवेट बैंक्स में या प्राइवेट लैब्स में होती है, बट नॉट फ्री नहीं होती। जेल्स में, अक्सर जेल्स में हम इस पे काम कर रहे हैं थ्रू द जेल डिपार्टमेंट, और जैसे ही हमें उनकी स्टेटस पॉजिटिव आता है तो वी गो फॉर लिंकेज एंड द ट्रीटमेंट टू नियरेस्ट HIV ट्रीटमेंट सेंटर। करंटली हमारे पास 50 ART सेंटर्स हैं, और हमने ऑलरेडी लिंक किया हुआ है। अब मैं काम कर रहा हूँ, जो कोविड मॉडल है, कहीं भी टेस्ट हो HIV का, वो हमारे नेशनल प्रोग्राम के MIS पे आ जाए, ताकि हम उनकी स्पाउस टेस्टिंग और उनकी किट्स टेस्टिंग कर सकें। 50 ART सेंटर्स का ब्रेकअप ये है कि 25 पंजाब में है, 15 सिंध में, 2 बलूचिस्तान और फेडरल में, और 6 के PK में। और अभी हम मजीद कुछ पे काम कर रहे हैं। पंजाब ने कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएगा, तो 20 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में नहीं है, तो पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे। और एक हमने मजीद गिलगित बल्तिस्तान में बनाना है, एक कश्मीर में, एक KPK में, एक फेडरल में, तो 4 हमारे पाइपलाइन में। मैंने मुल्तान DHQ में देखा टीजीज के लिए अलग वार्ड है, इट्स नॉट वर्किंग। हमने लाहौर में बनाया है गवर्नमेंट पंजाब के साथ सेपरेट टीजीज HIV क्लिनिक। मैं पर्सनली इसके खिलाफ में डिस्कशन करेंगे। ये कुछ थोड़ी सी ट्रीटमेंट सेंटर्स की प्लेसिंग है। 4 सूबों में हमारे ट्रीटमेंट सेंटर्स मौजूद हैं। ये उनके नाम मौजूद हैं हमारे पास। ये हमारी जो CBOs काम कर रही हैं हमारी TGs के साथ, FSWs के साथ और MSM के साथ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 17 हैं। उनकी लोकेशंस हैं। 100% आर बेस्ड इन पंजाब एंड सिंध। अभी तक KPK पूरा के पूरा और बलूचिस्तान खाली है। आई थिंक UNDP इस पे कोई उनके साथ काम करेंगी। मेरा इसमें ख्याल ये कि हमें सेपरेट HIV क्लिनिक्स के बजाय मेन स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। ऐसे ID क्लिनिक्स जहाँ पे TB की ट्रीटमेंट हो रही है, जहाँ मलेरिया की हो रही है, जहाँ डेंगू की हो रही है,
उसमें ही HIV को रखें। हम HIV को हम खुद अलग हमने छूत बना दिया है, हमने खुद स्टिग्मेटाइज किया है HIV को बहुत ज्यादा अहमियत देके। हमें HIV को बिल्कुल एक नॉर्मल डिजीज के तौर पे जैसे हेपेटाइटिस B और C के तौर पे हम देखते हैं। तो मैं पर्सनली इस पे मुझे मून की और तैयब साहब की अभी राय चाहिए होगी। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। ये सारे क्वेश्चंस डॉक्टर सामा ने पूछे थे, विच आर वेरी रेलिवेंट। 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंसेस हमारे साथ डेटा शेयर नहीं कर रहे। कुछ प्रोविंसेस हमारे पास बहुत रोबस्ट नेशनल MIS है, लेकिन कुछ प्रोविंसेस का डेटा नहीं आ रहा क्योंकि वो कायल नहीं है कि वो प्रोविंसेस के फील्ड के साथ शेयर करें। जो CBOs काम कर रही हैं की पॉपुलेशन के साथ, और जो नई जिंदगी है जो ड्रग यूजर के साथ काम कर रहा है, और जो चारों प्रोविंसेस की एज कंट्रोल प्रोग्राम है, उनके दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन नहीं है। देयर इज विजिबल गैप। गवर्नमेंट कहती है कि वो डेटा नहीं देते, वो कहते हैं गवर्नमेंट जो है उनका सपोर्ट नहीं है। इसमें सबसे अहम बात यह कि पुलिस का बहुत बड़ा रोल है टू सपोर्ट और टू डिस्करेज द ट्रांसजेंडर्स एंड ड्रग यूजर्स। तो गवर्नमेंट की स्टीवर्डशिप और सपोर्ट चाहिए होगा अगर हमने इन कम्युनिटीज को लूप में लाना है, उनको हमने सर्विसेज देनी है। बहुत ज्यादा बड़ा गैप मुझे नजर आया है हमारी APL-HIV की जो हमारी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। देयर इज अ बिग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फंडिंग। दे compete for the COPC site, the CBOs and APL-HIV। इसको देखना चाहिए हमें जॉइंट एफर्ट करना है टू कम्बैट द एपिडेमिक। हमारा MIS बहुत अच्छा है, इस पर हम आपसे बात करेंगे, दिखाते हैं आपको कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉस टू फॉलो के लिए ऑफिशियल इनिशिएटिव पंजाब ने लिया है, पंजाब के पास लॉस टू फॉलो का एक कंसल्टेंट मौजूद है और वो अपना सारा डेटा एनालाइज करके मुतलका DHO को भेजते हैं कि आप जो उनकी LHW प्रोग्राम है आउटरीच वर्कर्स के साथ, कि भाई इनको आप ट्रैक करें कि ये लोग आए थे और अब ये दवाई नहीं ले रहे। These were the questions asked by Dr. Saima। ये एक स्क्रीनशॉट है हमारे नेशनल MIS का। अगर आप इसमें देखिए लेफ्ट पे करंट अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, और ये वो लोग हैं जो इस हफ्ते नहीं आए, और ये इनकी हमें ट्रैकिंग आ रही होती है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने दवाई नहीं ली, यानी लास्ट 3 मंथ से नहीं आए। ये वो हैं जो इस वीक नहीं आए। और ये लॉस टू फॉलो हमारी डेफिनेशन इस वक्त कि जो 3 माह से दवाई लेने नहीं आया, और इन लोगों का वायरल ड्यू है। तो बहुत रोबस्ट, बहुत अच्छा हमारा MIS है, लेकिन कुछ प्रोविंसेस में नहीं है। इस पर हम बात करेंगे बाद में। आई वांट टू टेक अ ब्रेक फॉर दिस। जो मैडम रॉय हैं, इंडिया की बहुत मशहूर नॉवलिस्ट, वो कहती हैं देयर इज really no such thing as voiceless. They are only deliberate silenced or preferably unheard. उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं दे रही। ये हमारे स्टिग्मेटाइज मार्जिनलाइज लोग बात तो कर रहे हैं, शोर तो कर रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं पा रहे। तो हमारा कसूर है। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में आप डेफिनेशन यही है कि ये ग्रुप में भी होती है, एज इंडिविजुअल भी होती है, और इसमें हम उनको का स्टेटस भी बता देते हैं कि भाई हमारे दफ्तर में फला फला बंदा HIV पॉजिटिव है, या फला फला बंदा जो है ड्रग एडिक्ट है, ये सेक्स वर्कर है। हम स्टिग्मा किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम उनकी हमारा जबान, हमारा जेस्चर, उसको ब्लेम करना, और उससे क्या होता है कि अगर उसे HIV हो गया है तो वो अपने स्टेटस को बताएगा नहीं और इलाज के लिए नहीं जाएगा, और उसको हम डिस्करेज करते हैं कि वो अपना इलाज कराए। हमारे रवैये से, खासतौर पे जजमेंटल होने से जो है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इवन डॉक्टर्स को कि HIV जो है कितना कम इन्फेक्शियस एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस B। 1000 प्रिक के बाद एक प्रिक पे खतरा होता है HIV होने का, जबकि 1/3 every 3rd prick of hepatitis B is most infectious। स्टिग्मा की वजह से क्या होता है कि जो की पॉपुलेशन के लोग हैं वो सोशल कांटेक्ट में नहीं आते, वो हॉस्पिटल नहीं आते, और हम लाशौरी तौर पे जो है उनको हम डिस्करेज कर रहे होते हैं। हम शौरी तौर पे भी, और तो हमारी खानदानों में स्टिग्मा है, हम उनको भगाते हैं। हम देखते हैं कि इशारे पे हमें ट्रांसजेंडर्स मिलते हैं, हमारा रवैया कैसा होता है। हम खुद अपने आप को दिल में झांक के देखें। हमारा ख्याल ये कि ये गंदे लोग हैं, ये घटिया लोग हैं, और हम उनके साथ बात नहीं करते, उन्हें जनाजों में नहीं आने देते। इस पर हम बात करेंगे। उनको हम डिसग्रेस करते हैं, उनके साथ हमारा रवैया गैर इंसानी होता है, और उसकी वजह से वो एक्सक्लूजन का शिकार हो जाता है और बीमारी बढ़ाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब उनसे बात नहीं करेंगे, उन तक हमारी पहुंच नहीं होगी। एक तस्वीर है, आप देखें कि इसने स्टिग्मा को डिफाइन किया। राइट पे HIV पॉजिटिव पेशेंट है और लेफ्ट पे लोग हैं, तो लोग आपस में घुल मिल रहे हैं, और HIV का मरीज जो है बिल्कुल एक्सक्लूडेड है। ये HIV का मरीज है। आप देखें कोविड से पहले नर्स ने जो मास्क पहना हुआ है, नर्स ने ग्लव्स पहने हुए हैं, और डॉक्टर साहब का मूड देख लें। क्या इस खुशगवार मूड के साथ मरीज का इलाज हो सकता है?
मेरा सवाल है ये एक टीजी है। आप देखें कि कोविड से पहले भी नर्स ने मास्क पहना हुआ है और नर्स ने ग्लव्स पहने हुए हैं, और लुक एट द मूड ऑफ द डॉक्टर। आई एम सो सॉरी बट आई फील दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोटोग्राफ कि हम टीजी के साथ क्या कर रहे हैं। एक तो वो हॉस्पिटल आते नहीं, अगर आते हैं तो हम उनके साथ क्या करते हैं। ये थोड़ी सी एक आई वांट टू स्किप दी स्लाइड्स के जॉब में उनके साथ क्या होता है। लेकिन अगर आप देखें कि जॉब में उनको हम मौके नहीं देते या उनको हम जॉब देते नहीं है, जैसे ही पता लगे कि HIV है, ये उनकी जो HIV का स्टेटस है दिस इज कॉन्फिडेंशियल, उसको हम ब्रेक करते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ ये है, उनको हम जो है उनके स्टेटस को ब्रेक करते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं जॉब में। ये IBBS जो पाकिस्तान के सर्वेज हुए, ये लास्ट सर्वे 2016-17 में भी इन्वॉल्व था। इसमें हमने मुख्तलिफ की पॉपुलेशंस के साथ उनकी जो फर्स्ट लाइन है डिस्क्रिमिनेशन को हमने मेजर किया है, उनसे इंटरव्यू लिए। तो तमाम टीजीज ने कहा है, 52% ने कहा है कि हमसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, और टीजी सेक्स वर्कर्स ने कहा है 56% ने कहा है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है। ये है Dr. Umair, sorry for interrupting again, but we have 3 minutes left. Thank you. Right. ये हमारे पास harassment है for female sex workers, इसमें आप देख लें 44% तक harassment है। I think then I have to skip many things, no issue. ये हम उनको जनाजों पे इत्तिकाफ में मस्जिद में जुमे में नहीं आने देते, और हमारा ख्याल ये होता है कि ये उनको सजा मिली हुई है। We won't see an end to an epidemic as long as people living with HIV/AIDS feels unsafe and are forced to fringes of their communities. बहुत जरूरी है ये एम्बेसडर की मुझे पसंद आई प्रोवर्ब्स। स्टिग्मा की वजह से क्या होता है कि उनके लिए अस्पताल आना मुश्किल होता है, उनके लिए दवाई खाना मुश्किल होता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये स्टडी की थी हमने ग्लोबल फंड के साथ, US से एक्सपर्ट थे डॉक्टर डेविड, डॉक्टर नशपिया जो UNDP में, और मैंने की थी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है कि 35% लोग दोबारा नहीं आते। फर्स्ट विजिट पर ये आए, इन्होंने दवाई स्टार्ट की और फिर ये दोबारा कभी नहीं आए, और साल के बाद हमने सिर्फ देखा 35% रह गए, और आफ्टर 12 मंथ सिर्फ 26% मरीज जो हैं वो हमारे पास ट्रीटमेंट में रह गए। और लॉस टू फैक्टर जो है, इसको मैं असेस करना है कि लॉस टू फॉलो क्यों हो रहा है। वन ऑफ द रीजन इज स्टिग्मा एट द हॉस्पिटल्स, ये हम देख चुके हैं। प्रोग्राम डेटा ये बताता है हमारे पास कि हमारे टीजीज हमारी की पॉपुलेशन में बताती नहीं है कि 35% जनरल पॉपुलेशन के लोग की पॉपुलेशन के हैं और 65% जनरल पॉपुलेशन के हैं, इज अदर देन द IBBS। ये आप देखें नंबर्स भी हैं, परसेंटेज भी है। 65% जनरल पॉपुलेशन के लोग हैं, और हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास परसेंटेज वाइज 0.2% MSM है। IDUs और TGs हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। इसमें अगर TGs मुझे ये हिजरा सेक्स को 1% आर TGs, ये हमें बता रहा है कि 2 लाख लोग एस्टिमेटेड हैं, और उसमें से सिर्फ आप देख सकते हैं कि द डिफरेंस यहाँ से कितना है, कितने लोग 2 लाख में से 24,000 लोग ट्रीटमेंट में बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा। ये उसी का परसेंटेज है। प्रेप के बारे में डॉक्टर सामा ने पूछा था, प्रेप अवेलेबल है, लेकिन प्रेप की मोडालिटीज पे भी डिस्कशन हो रही है। हमने 2 जगहों पे, कराची और लाहौर में हमने इसको पायलट किया हुआ है। हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल हैं, लेकिन प्रेप के साथ चूंकि कुछ क्लियरेंस भी है, और कुछ उसमें कि कैसे करनी, कम्युनिटी बेस्ड डॉक्टर होगा, उसकी मोडालिटीज पे भी बहुत डिस्कशन है। अभी तक कंसेंसस बिल्डअप नहीं हुआ, इस पे हम काम कर रहे हैं। काउंसलिंग हमारे पास तमाम HIV क्लिनिक्स में अवेलेबल है, ये हम बात कर चुके हैं। हमारी जो मैंने बात की कि हम लॉस टू फॉलो पे कैसे काम करते हैं, हमारे पास MIS है और उसके जरिए हम काम करते हैं। I think I am done because I have to rush and I have to respect the time. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Hamad. I'm sorry. Thank you very much, Dr. Umair. That was a brilliant display of all the challenges going on with the key populations, especially जो आपका under-reporting का point है, that is well taken. I think this sets the stage for our next speaker. So let me share my screen. Dr. Abbas, can I just make a quick comment? There's a question in the question box which says, please use less abbreviations. So just a request to all our next panelists to try and avoid abbreviations if possible. Thank you. Okay, so our next speaker is Mr. Raheel Waqar. He is a graduate from UPenn's
School of Social Policy and Practice, and is the founder and CEO of White Rice. This is a behavior change agency that focuses on societal behavior change. And over the last 15 years, White Rice has impacted over 10 million lives, successfully delivered 500 plus programs and interventions for 100 plus organizations across 13 UN Sustainable Development Goals. And Raheel's behavior change work has been around health, water and sanitation, nutrition, education, and climate change, working across Asia, Africa, and the Middle East with mission-driven organizations to empower the disadvantaged communities and scale impact at the bottom of the pyramid. He is a recipient of the Australian Business Leadership Excellence Award, a Boham Media Fellow selected as Asia's top 100 entrepreneurs under the age of 30 by the Foundation for Youth Social Entrepreneurship, and has won several awards for his innovative work. So go ahead, Raheel. We would love to hear what you have to say. Hey, Assalamu alaikum, and thank you for the opportunity. Pleasure to be here. So do I have access to my slides, or should I just present let me just open up my screen. I think Walid had your slides. All right, or I can just directly share it. Can everyone see this? G. All right, perfect. So pleasure to be here with a generous introduction. So my work is primarily around behavior change. And a few years back, actually quite some time back, I think 7-8 years back, we were approached by UNFPA to work on the growing issue, which is still a growing issue, as Dr. Umair's presentation clearly highlights, around HIV, especially amongst the transgender community and as well as male sex workers. So our work was to develop a communication package to basically bring these issues to the surface, especially around stigma, and address those underlying conditions of why people do not avail HIV testing or avail those services. So just to give you some context, and again, this is reference to the work we've been doing. I don't know if it's changed by now, but by Dr. Umair's presentation, I think a lot of things are still the same, and actually it's growing in terms of stigma, if you could see. But in our case, again, the cases were really on a rise. We were dealing with a very close and resistant group, which has very strong community network. Social norms prevail there. So entry into that community, into those groups was always a challenge and was a difficulty from day one. The other interesting thing was that a lot of people knew the harms of HIV and AIDS and knew how it was spreading. So it's the challenge we saw was not the intention, it was the action gap. So knowledge was there, but there was a difference between that knowledge being translated into preventive actions. And most interestingly, the only way we could actually enter this community was through their peers. And I'm going to talk about that a little later, but peer influence showed you that it was very clear that if we wanted to intervene with any sort of message, it had to be from the people within the same community. So bearing that in mind, we went into a ethnographic research process. That's how we do our work, the work that we do around behavior change. And we spent at least around 4 to 6 weeks, especially in Lahore and in Karachi, where our team actually went in and embedded themselves in this community and really looked around the lifestyle and how these people lived, how they approached the problem. And one thing that was very revealing was, for us at least at that time, was that the entire transgender community has their own language, which they actually coin as Farsi. It's not actual Farsi, but that's how they represent it. And they have very distinct terminologies that they use. So the deeper we went into those discussions, we understood the structure and the hierarchy in the system. So there's always a guru and a chela. That's how the community operates. And these people are really the gatekeepers. They would, whenever a message was sent in, even if you went in with a message, they would actually give you the permission to actually, or the permission to their chelas to make that behavior a common behavior or start having a discussion around that. So that was another very important insight that came from the research. And along with that, we did a lot of observations and shadowing sessions with peer educators, where we would go to their datas, go to their
wherever they would hang out and spend time, and see how the conversation would unfold. How would they talk about the issue? How would they approach it? And as Dr. Umair said, that we would try to understand the underlying barriers and stigmas and fears around this. And we could see a major trust gap. And people really not even wanting to talk about this issue. They would divert the issue left, right, go into another conversation. But it was very important for us to see that what were those trigger points. So because of time, I'm just going to very deep, quickly go into the key insights. So these are some of the insights that really came out from this. One, we were, we understood that the hijra sex workers and the male sex workers were two very distinct communities. We could not have the same message to address them. The context was very different, so we had to develop different messaging. As I said, that we had to understand and incorporate the local dialect and the local language that they were using into our communication. We believe that information is equal to change or would change people, which is not true. We know a lot about issues, but when it comes to knowledge versus action, there's a difference between that. That's why bringing in a behavior change approach was very important. What we also realized, as also referred by Dr. Umair about the Bowl incident, movie, that these people are big into dramas, into content, entertainment content. So we said, how can we pick a lesson from that and incorporate that and move from education to edutainment in that process? Literacy is a big issue, so visual narrative is very important. The emotional hook is something else that came out very strongly. And lastly, what we realized that this community is heavily influenced by their peers. And that is why we looked at positive deviants. We looked at TGs who were actually very progressive, who were, maybe fall under that 26% people who repeat the behavior, and learned from them that what could we do to incorporate those insights into our content. So as a result, we came up with an animation series, a drama series that was basically used as a conversation starter with this community when it came to different issues. But what we realized was that this issue is not going to be addressed in isolation. We can't come up with the solutions unless we don't engage this. This is a very unique community. As I said, the language, the dialect, there's so many things that we were oblivious about. And so what we did was that we did a co-design process where we started drawing out things from the very early part and went back to them, and they would give us comments. So like when they saw these initial characters, they said that these look like housewives. They're completely not like us. You have to change it. So we said, all right, help us redesign this. And this is what we came up with. So you could see jewelry, you could see color, you could see makeup. And that was what, the level of detail that was required in terms of creating content that would resonate with them very strongly. And lastly, if I talk about the key takeaways and our lessons learned in this process, one, you cannot design a solution or a communication package or anything without involving them. It has to be a joint effort, a co-creation effort. Number two, language, as I said, is a very important factor for them. So we contextualize all our scripts. Once we wrote the scripts, we got them to incorporate their local terminology into the script so we could immediately create that connection when they would listen to the content. We used transgenders to do the voiceovers. So there was an immediate familiarity when they would listen to the animations and listen to the voices. They could feel that these are people like us. The stories, they could connect with those stories. We picked on edutainment, so there was a lot of entertainment based. We never said that it was training, because one thing we got, that they were sick and tired of training messages, of them being informed about what to do. They had their own prestige. So we converted the discussion into them actually watching a drama. But we had subtle cues within those dramas that allowed a conversation to be triggered post watching that content. And once they watch something, the average conversation time we recorded was 30 to 40 minutes. Because after that, they would say, what happened in that case? We would have done it differently. Why did this happen? So that was the intention, that they would have a post-conversation with the groups. And this was, again, delivered through peer educators. So we used people from the same community to go back to them and create that familiarity and sensitization that was required, so that it was not an outsider talking about the issue. So that was, I think, given my time frame, that's basically it. But yeah, I'll hand it over. Thank you so much, Raheel. That was amazing. So, as physicians, our hardest frustration is changing behavior of our patients, whether it's cigarette smoking or food addiction, or, in this case, if IV drug users or commercial sex work.
behavior change is the core of all things, but you have raised very important issues, especially the trust issue. That I think is the hallmark. Now I have one question. First of all, why did you name your organization White Rice? Right, that's an interesting conversation. So we basically, the original idea was that as you have white rice, it's a very basic dish. You can never have white rice alone. So there's something that you add on top of it. And that process of transformation of something very basic and ordinary becoming transformational because of what you add to it was what we wanted to do with our clients particularly. So we wanted to provide a creative canvas, a world of solutions where people could come in together and different problems could actually, you could come up with something transformational. So that element of transformation was what white rice. And number two, no one forgets it. Absolutely. So I think dal chawal. Dal is the transformation on the safed chawal. Secondly, tell me, the work that you did, is it still available to the transgender communities or go ahead? Sure. So I think since this was 7-8 years back, we worked with UNFPA and UNICEF was part of this at that time. It was shared in different communities through different NGOs that were working with the transgender community directly. I do not know the current status because generally these programs are managed by program managers and they move out. But I think it was there for a couple of years. But after that, maybe it is phased out. Maybe it's being used in some form or the other, but I'm not really sure. Okay, but is it available if yes, to revamp it? Sure, we've designed it, so we have the original files. We developed the content. Yeah, it is with us. Okay, great. Okay, great. Because I think this is a great resource, and you have discussed so many barriers, and I didn't even know there was a Farsi language. I mean, how can you communicate with anyone if their language is different? Yep. Okay. I appreciate all your insights. Thank you so much. Bahut shukriya. Okay, so we're going to move on to our next speaker, and taking Raheel's point. Yes, so we have invited Ms. Moon Ali, who is the program director of Khawaja Sira Society and the executive board member of ILGA Asia. She is a prominent transgender social activist, trainer, researcher, and founder of Pehchan Theatre. She was recognized internationally as a community hero and received the International Activism Award. And she has been a strong advocate of the transgender community and has advocated for HIV and other health issues in the transgender community. She's currently working with UN on implementing a service delivery model, especially for the transgender community relating to HIV prevention. So I hope she is here, Ms. Moon. Assalamu alaikum, welcome. Thank you so much for the very comprehensive introduction. So I just before starting my presentation, I just want to add a few things in Dr. Umair's presentation. Just want to add up. I just want to tell you the recent census, which was held in May 2021, and the census telling the population is around 21,435 for the transgender people. There are a lot of reasons behind this small figure of census. There are stigma and discrimination still communities facing to getting the CNSC card from the NADRA offices. And this is a very long debate, and I will try to address the stigma and discrimination during my presentation as well. So as Dr. Umair said, about the CBOs and community-based model, I just wanted to explain how CBOs are working and what kind of services they are providing to the transgender community. I'm just giving the example of the organization that name is Khawaja Sira Society. The Khawaja Sira Society is a community-based and community-led organization which was developed in 2012, and we are especially working on the health rights and human rights of the transgender community, and yes, we are also working on the policy making of transgender community and how we can do this and how we are doing this. We are doing this by creating the enabling environment, by having the advocacy with the key stakeholders to change their behavior and to sensitize them. And other than that, we are trying to sensitize and we are trying to counsel the mainstream people
to address the stigma and discrimination. Yes, next slide. Okay, as I said earlier, like this is the way, this is one of the good model which Pakistan is implementing, because there are a lot of stigma discrimination associated with the key population. Therefore, community is like very comfortable to get services from the key population as well. Therefore, we have developed a community-based model to provide the HIV prevention services to the key population. I'm specifically talking about the transgender community, but yes, there are other population who are getting services from the CBOs, like the men who have sex with men, and the FSWs, the female sex workers as well. Like I'm just going to share share a good practice, like how we did start the work to develop the CBOs or a CBO-based model. Initially, it's been like 8 years ago. We just proposed our CBO model in front of the Global Fund to make a community-based CBOs and community-based model in Pakistan. And initially, we started and conducted the services survey and focus group discussion with the community to know what their are needs, and to addressing the needs, we just proposed to the Global Fund like how we can move forward and run the HIV prevention system through the CBOs, through the community. And after that, we like got we received a grant from the Global Fund, and we started services with the UNDP Regional Hub and the Save the Children International Nepal. And when successfully implemented, we successfully implemented this model, we moved to the government side, and we did the advocacy with the National AIDS Control Program, and National AIDS Control Program developed the CBO's guideline to implement the national program through the CBOs. And I'm very glad to the glad that National AIDS Control Program taking consideration from the community, and they reach out to me and some other community members to develop this CBO's guidelines. And under this CBO guidelines, we are still providing the services to the transgender community. By keeping the view of the stigma discrimination and addressing the stigma discrimination in current CBO's model, we just did some innovation in terms of some advocacy tools and action plans and sensitization in sensitization manuals. As Dr. Umair said in their presentation, most of the healthcare providers are still not sensitized, how they need to deal with the community while providing them health services in the government treatment centers. So through that manual, we just trained some healthcare providers in Punjab level to sensitize their behavior and to make them familiar what kind of needs community have and what kind of services they want to get from the government treatment centers. And other than that, we also took another initiative in name of Pink Skills and Training Center. One of the key factor of the in the transgender community, the HIV prevalence rate is raising day by day because most of the transgender community are involved in the sex work, bagging, and dancing and functions. And due to this reason, this community is putting behind the curtain, and they are more vulnerable, and people used to treat them as a sex object because their source of earning is depending on the mainstream society. So we trying to make the transgender community economically empowered by providing them skill building training and providing them the other source of income to reduce their vulnerabilities. Next, please. And let's talk about the services we are providing in the current CBO-based model with the collaboration of National AIDS Control Program. It's a very comprehensive package. Through this comprehensive package, we are trying to addressing the needs of the community. What we do, we have outreach workers in our community-based model, and these outreach workers are from the transgender community. What they do, they reach out to the unreached population based
based on the hotspot analysis, because we have a very limited resources. What we do the risk assessment of the areas, like in which areas community is on the high risk, and we reach out to the specifically that high risk transgender community and providing them the behavior change communication counseling services. Through that communication, behavior change communication counseling services, we trying to change the behavior of the community and to convince them for the to avail the HIV testing services and STI diagnosis and treatment services for the community-based organization. And those community members who agreed to get services from the community-based model, we providing them free of cost HIV testing services through the community, and providing them free of cost STI diagnosis and treatment services through the community. Other than that, we are also providing them psychosocial support services through a community counselor. We have hired a community counselor from a community who is providing the psychosocial support to community to addressing their other health issues, like mental health issues. Like most of the community are involved in and suffering from depression, anxiety, and other mental health diseases. And we, through the community counseling, we trying to we're trying to change their behavior, and we're trying to make them empower in a way so they can speak up about their rights and about their needs, and reach out to the government easily, and do the advocacy for their actual needs. Other than that, we are under this community-based model, we providing the referral support system to those clients who got infected with HIV. And what we do in the referral support system, we do refer the transgender community in the government treatment center, and government treatment center, which is like developed by the provincial government. I'm talking about specifically for the Punjab province. So after getting the referral slip from our organization, that government treatment center is providing the free of cost services to the transgender community, and providing them free of cost ARVs on a monthly basis. Next slide, please. So when we talk about the stigma and discrimination, I always focus on the figures, because by focusing on the figure, we can reach out like what and how community is getting the services from the treatment center. If there's any flaw, then figure should be like very low. But as we did a lot of work in addressing the stigma and discrimination and giving the sensitization training to the service providers, now our follow-up system is very strong. I'm just quoting a figure of last 8 months. Out of like 5,184 behavior change registration, we did provide the testing services to the almost 3,000 clients, because we have a very limited resources. We have very limited HIV testing kits. What we do, we do test only for those clients who are on the high risk, and after did the testing of 3,000 clients, almost 142 clients are positive, and out of 142 positive clients, only the 122 clients are registered at the treatment centers, and they all are on ARVs now. 20 clients are in still lost to follow, because of the reason the community is migrating from one place to another to earn their income and to find their bread and butter from the different areas of Punjab. So this is the figures. Through these figures, I just try to like share like how government is providing the services to the community. And yes, as comparison to past few years, government is like more sensitized, and government is like taking community in a very like good way and providing them services as per their needs. So these are the few pictures which I have put in the presentation, like how we are providing the services to the community. So we have developed a drop-in center in a community-based model. Drop-in center is a
is a center which is developed within the community-based organization, and through this drop-in center, we open up space. We open up a safe space for the community to reach out us easily, not only for the health services, for the other services as well. Like if they're facing any kind of issues from the law enforcement agencies, from the other agencies, so they reach out to us, and we do make a plan, advocacy plan, as per the community issues, and to reach out the specific agencies to solve that specific issues. And these are the few pictures I have put in the slides, which shown like we reach out to the unreached population. And how we reach out to the unreached population, we reach out to the daras of the community. Daras is a place where the community live together, and we reach out to the specific daras of the community and providing them the services as per their needs. After like did a lot of work on the community-based model and community-based organization, but still we are facing many kind of issues. Like as I said before, we cannot provide services to the all community members. We're providing the services based on the risk assessment because of the limited of the resources, because of the limited of the stay medicines, because of the we have limited other health commodities and HIV testing kits. And other than that, there is still under the national grant, under the national community-based model, we don't have any kind of advocacy component to cover the other factors. Like what kind of other factors we need to address? Like as I said, there is not only reason of spreading the HIV within the community, and that is unsafe sex practices, but there are a lot of reasons. Because of that, communities facing a lot of issues and issues in terms of the violence, domestic violence, rape, harassment, and so on. And this leads towards HIV prevalence rate is increasing day by day, because community got raped through different groups, through different people, through different agencies even. So we also need to focus on the advocacy on the violence cases as well. And other than that, we are like focusing on the mobile services more. Like we have a mobile van, and through that mobile van we are reaching out to the community in who are living in the open spaces. So once that mobile van is going to the place where the community live, the people who are living around that specific areas is like thinking about like why this mobile van is reaching out to the community only. So this leads towards stigma as well. And because of this reason, community feel hesitant to get services through the mobile vans. And still we don't have in-house clinic in CBOs. Most of the community who want to get services from the CBOs, they want the services within the CBO. So we need to develop in-house clinic in the CBO as well. And yes, there is still a sensitization issue, and sensitization issues related to the law enforcement agencies. Law enforcement agencies still not sensitized. So like I'm going to give example to you guys. Like if our outreach workers go out and providing the contraceptive service to the community, our law enforcement agencies are very reluctant, and they show very resistant behavior towards our outreach workers. Like why they are carrying the condom loops publicly and providing the condom loops to the community. So they are still like putting the allegation on the CBOs, like we are promoting the sex work by providing the condom and loop services to the community. And other issue is that timing of the treatment center. We have a very limited time in our government treatment center, which is like from 9 a.m. to 1 p.m. and usually community wake up after 12, and it is very difficult for the PLHIV clients to get the services within the available time. Again, we still don't have, yes, there are some pilot researches, there are some pilot surveys on the PrEP, but still we don't have PrEP service availability as a second contraceptive. We are living in the Islamic Jamhuriya country, and it is very difficult to carry the condom loops easily. So PrEP can be used as a second contraceptive to reduce the HIV prevalence rate within the community. And other the biggest challenge is that like the literacy rate within the community is very
very low, it is very difficult to convince community to use the condom loops and to provide them the behavior change communication counseling regarding the safer sex practices. If we are focusing on the complete services for the PLHIV clients, then we also need to focus on the care and support of the PLHIV clients. We are only providing the ARVs and treatment services to the PLHIV clients, but we also need to focus on the care and support services. In our treatment centers, they are also not providing the free baseline testing services and X-ray services to the transgender community. The community need to pay the treatment center, which is a very small cost, but yes, there is a cost. But community is not willing to provide the cost to get the services. So we also need to focus on the proper care and support for the PLHIV clients. And other biggest challenge is COVID-19, the fear and stigma within the community. Most of the treatment centers who are providing the ARVs, they are more focusing on COVID-19 vaccination and COVID-19 services. So the PLHIV client is the PLHIV client is not feeling safe to go to the specific treatment center because of the fear they will be caught by the government treatment center if they got COVID positive as well. So due to this reason, the loss to follow-up is going to increase within the community. And yes, the one of the major factor within the community is drug use. This is actually drug abuse. Like drug usage, that's something else, and drug abuse, that's something else. So the community is involved in drug abuse, and due to this reason, community leads towards unsafe sex practices, either because of the clients and either because of the community's unwillingness. Next. And Moon, sorry to interrupt, but we have 2 minutes left. Thank you. Last slide. So there's a lot of thing which we need to focus, and I've already addressed how to cope up with the current challenges, but I have listed down some way forward in my presentation. Every country have a coordination mechanism which was developed by the Global Fund, and if we are providing and running the community-based model under the Global Fund grant, so we need to also focus on the country coordination mechanism system to continue the same services within the same resources as we did in past. In 2013 to 2017, there was a lot of resources. Under that resources, we did even cover the care and support of the PLHIV clients as well, and we also need to focus on the advocacy for the rights of the transgender minorities and other gender minorities with the government as well, and PrEP availability need to be ensured as one doorstep services, because community is not willing to get PrEP services from the government treatment centers. Community is willing to get PrEP services from the CBUs. So we also need to focus on the collaboration with other stakeholders for the expansion of services, because there are other agencies who are also focusing on the HIV prevention system. So we need to have a collaboration with them to create enabling environment and to expand the current services. And government, the CBUs are focusing on the sensitization program, but government also need to focus on the sensitization program for the healthcare providers. At least they need to be familiar what kind of services transgender are getting, and what are the needs of the community, and they want to from the government treatment centers. Because once the transgender, I'm going to share one example. If the transgender community going to the treatment center and getting services for the STI prevention, doctors even don't know how to do the physical examination of the transgender community, and because of this reason the transgender community is not willing to go to the treatment center, to go to the government centers to get the STI prevention services from the government centers. And yes, we also need to focus on these kinds of seminars and webinars
to make other people familiar, like what are the issues and what are the challenges communities are facing, and how we can collectively cope up with these challenges, and through promoting the inclusiveness, because what I have observed while providing the services to the CBOs, like this is not only the CBO work, this need to be like this need to be like ensure from the government side as well, and need to have a collaboration with the other agencies to provide the complete and comprehensive package to the community. And other than that, I am very thankful to the Apna Merit and the involved community in this webinar. So in local level, our government and our stakeholders need to involve the community in the consultation to work smoothly for the community. And yes, there is still no proper database available other than MIS system, which was developed by the National AIDS Control Program. I really want to acknowledge the National AIDS Control Program. They have developed a very comprehensive database system, which is a management information system. But under that management information system, we do incorporate only the health-related database of the transgender community. We need to integrate these systems with the other available opportunities. Like in Pakistan, we have health cards available for the community, but still there's no integration. Therefore, community is not getting the health card from the health ministry. And other than that, we also need to incorporate the violence database within the management information system to know like what kind of violence community is facing, and what kind of violence we need to address to reduce the HIV prevalence within the community. And last slide, I just put few pictures of the transgender community to show the best practice and to acknowledge my country. Like Pakistan is recognized one of the progressive country among the Muslim world, because Pakistan has set a very good practice to endorse a Transgender Protection Act. And yes, the provincial transgender legislation is going to be endorsed now. And other than that, I just want to add one thing more. We have a transgender welfare policies, which was developed by the Punjab Social Protection Authority. Under that transgender welfare policy, we can grab some data, and we can grab some policies to work on it, to implement on it. And these pictures are the pictures of few transgender community who are work with the Coke Studio, and our one transgender person who are sitting in the news channel as a world first news anchor. So this is my presentation. If anyone want to ask anything else other than this presentation, even I'm willing to share, because there's a lot of things, there's a lot of best practices, there's a lot of policy changes have happened in the Pakistan. And if you guys want to know more in detail, I'm okay to address it. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Moon. You are such a sanctuary for the transgender community, and I am so proud of all your efforts, and so happy to see that you can speak up for them and you are doing all the work for them. And I think that the trust issue, which Raheel pointed out, you know, it comes down to that point that without the support of the key populations, from the key populations, you know, we cannot penetrate or do any kind of advocacy without your support. So I think we might do a transgender session in HIV as a separate whole webinar, because I think there are lots of issues which need to be addressed. But thank you so much for your participation, and Jazakallah. If there are any questions, Hamad, we should move on to our next speaker, but please stay on, we may have questions. Okay, so next speaker is Mr. Tayyab Shah. Let me share my screen. So, thank you, Tayyab Saab. He is the chairman of Sheed Society in Lahore, Pakistan, strengthening health education, environment, and development. This is a community-based organization that works with female sex workers, and he will be talking about HIV prevention in female sex workers. As this is a bilingual talk,
He's most welcome to share his views in Urdu, which he was preferring. So, Tayyab Saab, Bismillah. थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू सो मच साफियोस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके उसके पैनल पर आकर और ये बात कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा कि हम लोग एक शीट सोसाइटी, एक सीबीओ है जो फर्स्ट पाकिस्तान में सीबीओ थी। लुबना इसको हेड कर रही थी और लुबना ने मतलब काफ़ी काम किया 10 साल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिसमें मल्टी और इंटरनेशनल डोनर सारे थे। 99 में फिर हमें कम्युनिटी की तरफ से थोड़ा सा फीडबैक आया कि बाजी आप अपना काम खुद से क्यों नहीं करती, ये लोग आते हैं 6 महीने साल काम करके चले जाते हैं, तो बीच में गैप आ जाता है। फिर उसके बाद हमने शीट सोसाइटी एस्टेब्लिश की और 2003 से हमने काम शुरू किया। काम तो हम स्टार्ट से कर रहे थे मगर 2003 में रजिस्टर्ड हुई। देन हमने एक सीडा के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट किया बच्चों की एजुकेशन पे। उसको हमने HIV एड्स के साथ लिंक किया एम्बेसी ऑफ फिनलैंड के साथ, क्योंकि जो फीमेल सेक्स वर्कर्स के बच्चे थे, ये माएँ जोन सी थी, ये सुबह एक तो लेट उठती हैं और अपने बच्चों को केयरिंग नहीं कर सकती थी। इसलिए हमने एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ इनको HIV एड्स के ऊपर माओ को इंगेज करने के लिए उनको साथ हमने रखा उस प्रोजेक्ट में भी, तो इंटरलिंक था। अब मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, उसके बाद फर्दर जो चीज़ें होंगी वो मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ये हमारा मतलब शीट सोसाइटी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ एजुकेशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से वो है। इंट्रोडक्शन में जी, शीट सोसाइटी हैज बीन वर्किंग फॉर FSW सिंस 99। शीट इज अ फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद फीमेल सेक्स वर्कर्स इन द रेड लाइट एरिया लाहौर एंड अदर पार्ट ऑफ द डिफरेंट सिटीज। जिस हम इकबाल टाउन में भी काम कर रहे थे, हम सरगोदा में भी काम कर रहे थे, और लुबना के कुछ लिंकेजेस थे जो कि पूरे उसके मतलब स्ट्रॉन्ग थे क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उस वजह से हमें दूसरे शहरों में भी काम करने में इतनी वो प्रॉब्लम नहीं आई। इवन हमारा लास्ट जो प्रोग्राम था वो हम दुबई में कर रहे थे। जो फीमेल्स जाती हैं दुबई और ये शारजा वगैरह और इन जगहों पे ग्रुप्स में, उनके ऊपर भी हमने काम शुरू करे थे क्योंकि हम उनको भी अवेयरनेस देना चाह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से हम वो प्रोग्राम अभी फिलहाल स्टॉप है। Sheet has very strong network with the FSW's network operators at national and international level. Tayyab Main साहब, areas of जी सर, एक्सक्यूज मी, ये लुबना कौन है, प्लीज आप बता दें। लुबना बेसिकली शीट की फाउंडर थी और पायनियर वो थी, और उनके मेरी वाइफ थी, और ये लास्ट मतलब 18 में उनकी डेथ हुई है। जो कि एक हाँ जी, जो कि गैप आया काफी, मतलब जो लोग जानते थे उनको वो तो मतलब इस चीज को समझते हैं कि काफी मतलब गैप आया काम में। मतलब उसको हम लेकर चल रहा हूँ। मेरी बेटी है मेरे साथ, और मैं मतलब इस प्रोजेक्ट को, हमने ग्लोबल फंड के प्रोजेक्ट को अभी भी हमने इसको कंप्लीट किया, और अब UNDP के साथ भी हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। हमारे जो मेन एरियाज हैं वो जी FSWs के हेल्थ है, राइट्स हैं, एजुकेशन है, हम एडल्ट लिटरेसी पे भी काम कर रहे हैं FSWs के साथ। हम उनके चिल्ड्रन के साथ भी कर रहे हैं। इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, लीगल इश्यूज हैं, क्योंकि हम कम्युनिटी में बैठे हुए हैं, तो हमें रात को 10 बजे भी 11 बजे भी बेल हो जाएगी कि जी आए और आके हमें थाने में, पुलिस स्टेशन में हमारे साथ ये मिसहैप हुआ है, आप हमारे साथ आके इसको सॉल्व करें। तो वो भी हमें करना पड़ता है। कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन है, टेस्टिंग है, और रेफरिंग है हमारी उसकी ART सेंटर्स पे। तो ये तो हमारे मेन एरियाज हैं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हेलो जी, थैंक यू। अच्छा, परफॉर्मेंस ओवरव्यू में हमारे पास जो शीट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमने जो अभी ग्लोबल फंड के साथ, हमारा UNDP के साथ प्रोजेक्ट भी चल रहा है, करंटली हम इसके साथ काम कर रहे हैं। जो हम पास्ट में काम कर चुके हैं उसमें डिफरेंट UN एजेंसीज भी हैं, और डिफरेंट एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड, एम्बेसी ऑफ फिनलैंड, कॉमनवेल्थ, सीडा, एक्शन एड, मतलब डिफरेंट इसमें काफ़ी वो हैं जिसके साथ हम डिफरेंट टाइम्स के ऊपर और डिफरेंट प्रोग्राम्स कर चुके हैं। तो इनमें हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हम अपने काम के हवाले से और अपने काम के उसमें हम जितना भी इनको अपनी कम्युनिटी को
सेफर सेक्स की तरफ ले जा सकें, क्योंकि जब हमने काम स्टार्ट किया था तब HIV एड्स पे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, स्पेशली कम्युनिटी में। तो उस वक्त तो हम जब ये कॉन्डम्स की बात करते थे या किसी चीज़ की बात करते थे तो दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते थे और कहते थे कि नहीं नहीं, ऐसे कोई मरीज, सॉरी मैं पंजाबी में भी यूज़ कर रहा हूँ, इधर कोई मरीज नहीं है और इधर आप हमारे घर में ना आए आप। तो वो फिर एक आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम लगा हमें कम्युनिटी में अपना एक ट्रस्ट, मतलब एक ट्रस्ट डेवलप था हमारा। और ट्रस्ट करने के मतलब उसमें यह था कि फिर जो यहाँ की जो एरिया की फीमेल सेक्स वर्कर्स थी, फिर वो खुद से हमारे ऑफिस आना शुरू हुई, हमसे ट्रीटमेंट लिए, उन्होंने कॉन्डम्स लिए। तो वो एक हमारे लिए एक जो चैलेंज था वो एक ख़त्म हुआ आहिस्ता आहिस्ता। साथ साथ जैसे जैसे हम बाहर काम करते रहे और लिंक करते रहे, तो फिर काफ़ी जगह हमने देखी, क्योंकि ब्रॉथल में काम करना आसान है। बाहर जो केके हैं, केके से मीन कोठी खाना। कोठी खाना वो होता है जहाँ पे एक पिम्प या एक नायका वो हेड कर रही होती हैं और उसके अंडर 5 से 6 7 औरतें बैठी होती हैं, तो वो काम कर रही होती हैं। फिर इसमें होम बेस्ड भी है, फिर इसमें स्ट्रीट बेस्ड भी है। तो वो डिफरेंट इनकी कैटेगरीज में फिर हमने काम किया। मतलब अब अगर आप अदर उसको ले लें, की पॉपुलेशंस में ले लें, तो ये एक हिडन पॉपुलेशन है। FSW जो सी हिडन है, ये कभी भी आपको आके अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं वो करेंगी कि जी हाँ मैं सेक्स वर्कर हूँ, ये हमेशा डिनाइल करती हैं। तो हम जो हमारी आउटरीच वर्कर्स हैं वो इसी कम्युनिटी से हैं, तो उसके बेस पर हम लोगों को इनके तक एक्सेस जो सी होती है वो फिर आसान हो जाती है। फिर ये डिनाइल नहीं कर सकती कि जी मैं सेक्स वर्कर नहीं हूँ। हमारे पास बहुत सी केस स्टडीज हैं। होम बेस्ड एक औरत थी, हमने उसका टेस्ट किया, वो उसने फिर अपनी स्टोरी बताई कि मैं जब निकलती हूँ घर से तो मैं ये कह के निकलती हूँ मैं दाता साहब जा रही हूँ या मैं किसी को मिलने जा रही हूँ। तो इस कहते वो जो मेरे पास टाइम होता है उसमें मैं अपना क्लाइंट्स को वो करके तो मैं फिर अपने घर के बच्चों के लिए पैसे लेकर आती हूँ। तो काफी काफी केस स्टडीज हैं हमारे पास उस हवाले से भी, क्योंकि वो होम बेस्ड थी। इस तरह फिर हमने मतलब हमारा मतलब एक चैलेंज है हमारे लिए, इनकी आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वो हम जिस तरह भी कवर अप करते हैं, कुछ पहले स्टार्ट में लुबना के उसमें थे, कुछ उससे चलता था, कुछ अभी आउटरीच वर्कर्स के साथ है। तो इस तरह हम उनकी आइडेंटिफिकेशन करके, और जो मोर और लेस जो सा मून ने बताया है अपने काम के हवाले से कि हम किस तरह वो काम कर रहे हैं और क्या चैलेंजेस हैं, मोर और लेस हमारे सेम है, क्योंकि हम भी उसी प्रोजेक्ट के मतलब वो हैं। मगर हमारी थोड़ी सी चीज़ें जो सी हैं वो डिफरेंट हैं बनस्बत इसके टीजेस के और MSM के हवाले से, क्योंकि FSWs की आइडेंटिफिकेशन आपको मैंने बताया, और ये अपना जो स्टिग्मा है इनके साथ, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। वो हमें इवन वो ART सेंटर्स पे भी, और वो हमें आम उसमें भी चल रहा है। अब सॉरी टू से सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, तो मैं डॉक्टर्स के हवाले से एक बात करना चाहूँगा, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स के हैं कुछ तो बहुत अच्छे हैं और कुछ उनसे हैं वो बहुत ही फिर अच्छे हैं, इसलिए कि वो फिर जब उनको ये पता चलता है कि ये इस एरिया से आई है और ये फीमेल सेक्स वर्कर है और ये HIV पॉजिटिव है, तो उसका जो बिहेवियर टुवर्ड्स FSW होता है वो बहुत ही अजीब सा होता है। टाइमिंग की मैंने हमेशा बात की कि टाइमिंग जो सी है वो हमारे ART सेंटर NSCP उस पर काम कर रहा है, और होपफुली वो इंशाल्लाह ताला जल्दी वो हो जाएगा। टाइमिंग की जो हमें प्रॉब्लम आती है, टाइमिंग्स में FSW जब सारी रात कमाएगी और वो सुबह सोई होगी, तो उसको हम ART सेंटर कैसे ले जा सकते हैं जबकि आपका टाइम वहाँ पे शार्प टाइम है जी, 1 बजे वो बंद हो जाता है। तो वो एक इनको थोड़ा सा पॉलिसी में थोड़ी सी चेंजेस लानी चाहिए और इसमें देखना चाहिए कि एटलीस्ट वो डॉक्टर उमैर ने मुझे बताया था कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग इसका इवनिंग तक टाइम ले जाएं, तो वो फिर एक सूटेबल हो जाएगा, क्योंकि इनका इतना लेंथी प्रोसेस है। एक तो वो टाइम नहीं देते, जब पहुंच भी जाएं, अच्छा आप कल आइएगा, टेस्ट कल करने आए। तो FSW को घर से लेकर आना ये सबसे बड़ा चैलेंज है, उसको वहां से उठाना, क्योंकि वो अपनी नींद कभी भी उसने फिर नेक्स्ट नाइट को काम वो जाना होता है, अपने बिजनेस पे जाना होता है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको सुबह जाके जाना, फिर गालियां भी सुननी, वो बुरा भला भी कहती हैं, क्योंकि उनको तो इससे कोई वो नहीं होता। और जिस वक्त इनको अपना रिजल्ट वो होता है डिस्क्लोज होता है, तो ये फौरन ही
ये माइग्रेट कर जाती हैं। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा FSWs के मतलब जो काम कर रही होंगी ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनके साथ भी हो, और ये हमारे साथ तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो एक फौरन अपने माइग्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारा बिजनेस खराब होगा और हमारे रिलेटिव्स को पता चलेगा, हमारी फैमिली को पता चलेगा, जो हमारा ग्रुप है उसमें पता चलेगा, तो हम मतलब बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो अपने बिजनेस को बचाने के लिए फिर ये माइग्रेशन कर जाती हैं। सॉरी, इसमें नेक्स्ट स्लाइड जी प्लीज। जी, इसमें मैं काफ़ी हद तक तो मैं आपको बता चुका हूँ जो चैलेंजेस हैं, और सेम इसमें मतलब हमें काम करने में जो चैलेंजेस आ रहे थे वो मैंने आपको बताया कि जी हमें इनके आइडेंटिफिकेशन में, इनकी अप्रोचिंग में नायिकास जो सी हैं वो थोड़ा सा वो करती हैं। जब हम किसी केके पे हम जाकर वो करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो नायिका जो सी होती है वो डर जाती हैं। एक सोशल मीडिया ने बहुत काम खराब किया हुआ है कोविड के बाद। सोशल मीडिया पे जो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि जी बाकायदा वो वॉइस मैसेज हैं कि काइंडली आपके घर में कोई आए और वो आपको ये कहे कि हम आपका ब्लड टेस्ट करने आ रहे हैं, तो उनको ना इजाज़त दिए क्योंकि वो आपको HIV पॉजिटिव कर रहे हैं, वो आपको एड्स का इंजेक्शन लगा रहे हैं। इस तरह के कई मैसेजेस आ रहे हैं और वो सर्कुलेट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से भी हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम पहले कोविड की वजह से आ रही थी, अब जब हमारी आउटरीच वर्कर्स जाती हैं फील्ड में, क्योंकि मोस्टली हमारा काम आउटरीच में ही है, तो जब वो जाते हैं और वो जाके वहाँ पे बात करती हैं, तो उनको वो इनकार कर देते हैं कि नहीं जी हमने नहीं करवाना। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमने मैपिंग की थी। मैपिंग में हमने आइडेंटिफाई किए जो एरियाज हमारे जो एरिया हमारे पास था उसमें जो स्पॉट्स थे, उनको हमने मैपिंग करने के बाद उनको हम वो कर रहे हैं, उसको जितना भी हम कवर कर सकते हैं कवर करते हैं। CNAC कार्ड हम इनके बना रहे हैं। इनके CNAC कार्ड नहीं होते क्योंकि इनके हस्बैंड का इशू आ रहा होता है, फादर नेम का। अब वो इशू हमें, जो हम स्कूल ड्रॉप इन सेंटर सॉरी ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कूल चला रहे हैं उसमें भी आ रहा है, और ये हमें उधर भी आता है जब हम इनकी टेस्टिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि इनके फादर नेम का बहुत बड़ा इशू है। तो वो हमें उसको भी हम साथ साथ कवर अप कर रहे हैं। लैंग्वेज है, लैंग्वेज इनकी जो सी है, जब तक हम इनकी लैंग्वेज में बात ना करें, इनकी एक अपनी वो एक मैं प्रेजेंटेशन देख सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि फारसी, और ये इनकी भी फारसी है, FSWs की भी, इनकी भी एक अपनी लैंग्वेज है, एक अपनी ज़बान है। क्योंकि आप बैठे होंगे और ये अपनी ज़बान में जब बात करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगी कि इन्होंने क्या बात की। तो वो फिर हमें बिल्कुल इनकी लैंग्वेज में जाके बात करनी पड़ती है, पंजाबी में, और फिर बड़े आसान लफ्ज़ों में, ताकि इनको ये फील ना हो कि हम इनके लिए कोई वो मतलब कोई ख़ास वो कर रहे हैं। तो बड़ा ही सिंपली हमने इनको लेकर चलना होता है, और जो हमारी आउटरीच वर्कर्स होती हैं वो पहले से एक ग्राउंड बना लेती हैं, और फिर हमें हमारी जो LHV हैं, STIs की प्रॉब्लम इनमें बहुत ज़्यादा है। अब STS में हमारे पास जो फिगर्स आ रही थी, उसकी जो हमें टारगेट में हमें बताया गया इस प्रोजेक्ट में, वो बहुत 109, लाइक मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो वो उससे कहीं ज्यादा उसमें, क्योंकि हर दूसरी फीमेल सेक्स वर्कर्स में STIs का प्रॉब्लम है। तो वो हमारे पास उसका तो रेशियो बहुत ज्यादा आता है। प्लस फिर हमें जो मेडिसिन उसके लिए हवाले से STIs मैनेजमेंट के हवाले से दी गई है, वो हम उन्हीं के उसमें रखते हैं। मेरा एक और एक इशू है, वो ये है कि जब हम FSWs पे, या मतलब मैं FSWs के हवाले से ही बात करूंगा कि FSWs को हम टेस्टिंग भी करते हैं, हम उसका रिजल्ट भी देखते हैं, पॉजिटिव है या नहीं है वो एक अलग चीज है। क्यों नहीं हम लोग इनके स्पाउसेस और इनके जो पार्टनर्स हैं उसके ऊपर क्यों नहीं काम होता? मतलब आप एक एंड जो है वो कर रहे हैं और एक एंड आपने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्योंकि अगर FSW पॉजिटिव निकल रही है तो उसके जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उसमें कुछ उसके मतलब जो हस्बैंड भी हो सकते हैं और कुछ पार्टनर्स भी हो सकते हैं जो जिनको ये अपना वो समझते हैं, मतलब करीबी समझते हैं। तो इनके साथ क्यों नहीं टेस्टिंग हो सकती? और इसके अलावा और हमारे पास वो मैंने बताया कि ये थोड़ा सा रिलेक्टेड होती है उसके हवाले से। ये हमारी कुछ पिक्चर्स हैं जिसमें हम लोग एक्टिविटीज है, हमारा ड्रॉप इन सेंटर है, और उसमें ये आकर सिर्फ उसमें ये नहीं, ऑफिस में बैठ के ये लोग अपने इश्यूज आपस में ही बैठ के हम इनको कहते हैं कि आप डिस्कस करें, ताकि जो इनकी जो मेंटली ये जो एक स्ट्रेस होता है वो इनका खत्म हो। ये फिर बैठ के कैरम खेल ली या लूडो खेल ली,
इस तरह की कुछ गेम्स वगैरह इनको खिला दी, तो ये फिर थोड़ा सा रिलैक्स होती हैं और रिलैक्स होकर फिर ये मतलब वापस चली जाती हैं अपने घरों को। तो जो भी इनको ट्रीटमेंट हमारे जो ऑफिस में जो हमारी ट्रीटमेंट है, जो हमारे ऑफिस में जो मेडिसिन अवेलेबल होती है वो इनको हम प्रोवाइड करते हैं और इनको देते हैं। ये डिफरेंट हमारे उसमें कुछ गेम्स हैं, कुछ हमारी मीटिंग्स हैं, तो इस तरह हम इनको लेकर वो कर रहे होते हैं। ये हमारे वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से हैं जी। हमारे मतलब जो बहुत ज़्यादा मशहूर पाकिस्तान में सिंगर्स थे, असद अमानत अली साहब, अमानुल्लाह साहब मरहूम, और दुर्दाना रहमान है फिल्म स्टार, इनके साथ हमने वो वर्ल्ड एड्स डे की कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, क्योंकि हमारा कोशिश ये होती है कि वर्ल्ड एड्स डे के ऊपर ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए। आप अगर डॉक्टर हैं या मैं अगर कोई अपने तौर पे कोई मैसेज दूंगा तो वो 2 बंदे सुन लेंगे, 4 नहीं सुनेंगे। और जब इनके ही हवाले से कोई चीज आप इस तरह की एक्टिविटी, मतलब म्यूजिकल नाइट कर दी हमने, इस तरह की कोई चीज करेंगे, तो वहां पे जो 300-400 बंदा होगा, तो वो एक मैसेज जो अगर कोई फिल्म स्टार दे रही है या कोई सिंगर दे रहा है, तो वो 400 बंदे उसको अडॉप्ट करेंगे उस मैसेज को। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिफरेंट उनके साथ हमने वो भी की है। ये कुछ सरगोदा के हमारे कुछ वॉक्स वगैरह हैं, सरगोदा में हमने काम किया था, सरगोदा में हमने उसमें किया था। ये ओवरऑल हमारा जी एक वो है। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। जी, थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत शुक्रिया तैयब साहब, बहुत ही आई ओपनिंग आपने शेयर की हैं रियलिटीज ऑफ फीमेल सेक्स वर्कर्स, और जज़ाकल्लाह कि ये बहुत मुश्किल काम है इतनी स्टिग्मेटाइज्ड और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन की हेल्प करना, मगर ये मजबूर औरतें हैं और इनकी भी एक आवाज़ है जो कि शायद बिल्कुल ही दबी हुई है। एक आपने पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट रेज किया है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। तो यहाँ पे जो यूएस में है वो ये है कि अगर कोई HIV पॉजिटिव डायग्नोज होता है तो उसके जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको एक अनोनिमस एक किस्म का लेटर दिया जाता है कि आप एक्सपोज हुए हैं तो प्लीज गो एंड गेट टेस्टेड। अब आई थिंक मैं ये क्वेश्चन डॉक्टर उमैर से पूछूंगी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कोई पॉसिबल है for the partners, which is a very important transmission dynamics जो कि चल रही है unhinged. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर। जी, इसमें 2-3 तरह के लेवल्स पे हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। हम एक सेपरेट अपना के साथ सेशन लेंगे IDUs के लिए। मुझे बड़ा क्लियर कट पता है कि वो जो इदारा है नई जिंदगी ट्रस्ट, उनके अंदर उनका मैंडेट है कि 100% IDUs की वाइफ्स को और पार्टनर्स को, पार्टनर्स की ट्रेसिंग बहुत मुश्किल है कि यू डोंट नो कि एक पार्टनर है, ये 50 पार्टनर्स हैं। लेकिन मैं फोकस करूंगा कि पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम स्पाउस टेस्टिंग भी अगर कर लेते हैं 100% की, तो वी हैव अचीव अ लॉट। तो हमने 100% IDUs की वाइफ्स को, और अगर वाइफ है तो उसके हस्बैंड को, अगर IDU फीमेल है हमने मैंडेट दिया हुआ है और वो टेस्ट कर रहे हैं। और अगर किसी की स्पाउस पॉजिटिव है, कोई खातून मदर पॉजिटिव है, तो फिर 100% किड्स आर टेस्टेड एंड दे आर लिंक्ड टू ट्रीटमेंट। एक तो ये अवेलेबल है, अगर एक की पॉपुलेशन के लिए है तो ये सबके लिए हो सकता है। और आई थिंक तैयब साहब हैज अ वेरी वैलिड पॉइंट कि ग्लोबल फंड फंडेड प्रोजेक्ट के अंदर एक की पॉपुलेशन के लिए अगर ये हमने किया हुआ इंटरवेंशन, तो व्हाई नॉट फॉर अदर की पॉपुलेशंस। तो पॉइंट टू बी नोटेड, और ये CBOs ने रेस्ट करना है, क्योंकि आपके इल्म में है कि 1 जुलाई से नेशनल प्रोग्राम जो है वो फंडिंग के सिलसिले में कंप्लीटली खत्म हो गया है, और इट इज UNDP विच इज ऑन द ड्राइविंग सीट। 1 जुलाई 2021 से नेशनल प्रोग्राम की हैसियत सिर्फ अलामती है, कंप्लीटली 100% फंडिंग UNDP के पास है ट्रीटमेंट की और टेस्टिंग की। सो मेरा पॉइंट फिर है कि अगर एक की पॉपुलेशन के लिए है तो सबके लिए होना चाहिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है जो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो पाकिस्तान के अंदर ब्लड बैंक्स के अंदर टेस्टिंग हो रही है HIV की, जो पाकिस्तान के अंदर सरकारी और निजी लैब्स के अंदर टेस्टिंग हो रही है, वो सारा डेटा नेशनल प्रोग्राम के पास नहीं आ रहा। आई एम वर्किंग, और मेरा अभी ये काम बिल्कुल अकेला है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड कि
हमारे MIS पर पूरे पाकिस्तान की लैब्स और ब्लड बैंक्स HIV पॉजिटिव को रिपोर्ट करें विद देयर सेल नंबर्स एंड देयर लोकेशंस, so that we can trace them, we can confirm them, we can test their spouses and their kids. इसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ डॉक्टर बुशरा से, खासतौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोविड में मॉडल अपनाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि एयरपोर्ट के अंदर रैपिड कोविड टेस्टिंग हो रही है, और पूरे पाकिस्तान के अंदर पब्लिक हेल्थ और प्राइवेट सेक्टर में हजारों लैब्स कर रही हैं PCR कोविड का, लेकिन NCOC से दे आर बाउंड टू शेयर देयर डेटा। तो एक डेटा गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो व्हाई नॉट दिस इज फॉर HIV। नेशनल प्रोग्राम के पास इशू ये है कि जो हमारे सेंटर्स में टेस्टिंग हो रही है 50, मेरे पास सिर्फ उनका डेटा है, मुझसे कोई प्राइवेट लैब, इट इज अ नोटिफाइबल डिजीज इन पाकिस्तान, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। तो डॉक्टर बुशरा से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोविड मॉडल को HIV के अंदर अडॉप्ट करें। मेरा MIS मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, बहुत रोबस्ट है, मुझे सिर्फ सेल नंबर्स और एड्रेसेस मिल जाएंगे। मैं अपनी CBOs के जरिए, मैं आउटरीच वर्कर्स के जरिए 100% पाकिस्तानीज को रिकन्फर्म करूंगा, स्पाउस टेस्टिंग करूंगा, और इंशाल्लाह उनके बच्चों को भी टेस्ट करके ट्रीटमेंट पे लिंक करूंगा अगर वो पॉजिटिव हो। थैंक यू। Thank you so much. Is Dr. Bushra available? She is there. Yep, she's on the call. जी Dr. Bushra, can you comment? जी ज़रूर। देखिए, बहुत ही सैड है, हमारे ये सारे कंट्रोल प्रोग्राम्स आर टोटली एब्सोल्युटली फंडेड बाय ग्लोबल फंड, और ये कोई 15-20 साल से ये सिलसिला चल रहा है। गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन टू कंट्रोल ऑफ डिजीजेज इज मिनिमल और नॉन एग्जिस्टेंट। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट फंडिंग कहीं से लाए, और वो PC1 हमारा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। सो दिस इज़ वेरी सैड। दूसरा ये है कि प्रॉब्लम्स को जानते बूझते भी जब ग्रांट्स के लिए एप्लीकेशन तैयार हो रही होती है, दीज पॉइंट्स आर नॉट डिस्कस्ड। सारी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर झगड़े चलते रहते हैं, और बड़ी मुश्किल से, आई एम टेलिंग यू अबाउट माई एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ही लिमिटेड सा है, थोड़ा सा है, बट देर इज सो मच टू बी डन, एंड डिस्कशन टेक्स प्लेस ऑन वेरी इनसिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स, तो टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके अंदर। जैसे HIV का ये, दिस इज अनएक्सेप्टेबल जो सिचुएशन जो डिस्कस हो रही है। लेकिन COVID-19 मिटिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में ग्रांट की अपॉर्चुनिटी आई थी हमारे पास, फंडिंग अपॉर्चुनिटी, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हैं, एंड उसके अंदर ट्रांसजेंडर्स का जो ये हेल्थ कार्ड का गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, उसको हमने टेकअप करके हमने फंडिंग के लिए अप्लाई किया कि हम वो सेंटर्स सिलेक्ट कर लें जो CBOs की प्रॉक्सिमिटी में हैं, और उन हेल्थ केयर सेंटर्स को तैयार करें, वहाँ पे इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल स्ट्रेटजीज भी हों, डॉक्टर्स को ट्रेन करें, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन करें कि मरीज से बात कैसे करनी है, ताकि सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को नहीं, दूसरी और की पॉपुलेशन की स्टिग्मा फ्री ट्रीटमेंट वहाँ पे हो सके। क्योंकि इन पेशेंट केयर का भी मसला है ना, किसी भी रेगुलर हॉस्पिटल में जाके जो ही पता चलता है कि क्या बैकग्राउंड है या ट्रांसजेंडर्स तो पहचाने जाते हैं, तो वो एकदम से फिर वो एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ केयर मिलता है। सो हमने ये प्रपोजल में अपने डाला हुआ है कि किसी तरीके से एक तो स्टिग्मा फ्री इन पेशेंट केयर प्रोवाइड हो जाए, फिर ये कि वहाँ पे जो लोग भी आएंगे उनकी फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग विल बिकम ईजियर, क्योंकि एक तो हेल्थ कार्ड मिला हुआ होगा उनको, तो ये पता होगा कि इनकी रेजिडेंस कहाँ पे है, और अगर वो कहीं मूव भी करते हैं तो दे विल टेक देयर हेल्थ कार्ड विद देम। तो इसको वो बना के एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और दूसरी और फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करने का हमने प्रपोजल डाला हुआ है उसके अंदर फंडिंग में। अब देखें वो उसकी पेंडिंग है उसका रिजल्ट। सो काम काफ़ी सारे करने की कोशिश हो रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक हो चुकनी चाहिए थी, क्योंकि CBOs भी रेगुलराइज्ड नहीं हैं। CBOs से मशवरा लेते हैं, जब ये इस किस्म की C19 RM के लिए भी था, लेकिन उसमें यही तमाम मसाइल थे। अब कोविड मिटिगेशन में उसको फिट कैसे करें? सो जब मेन ग्रांट की जब डिस्कशंस हो रही होती है ना, उस वक्त ये सारी बातें होनी चाहिए ताकि सही चीज़ में फंडिंग मैं ऐड करूं, मेरा फिर आपको रिक्वेस्ट है कि जो कोविड, बिकॉज यू आर सिटिंग इन NCOC, हमारे लिए आप ही आइकन है और लिंक है थ्रू गवर्नमेंट। हम जितना भी काम कर लें, जब तक नेशनल डेटा MIS में नहीं आएगा, ब्लड बैंक्स में टेस्टिंग हो रही है एज पर नेशनल गाइडलाइंस, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ रही, तो मेरे पास सिर्फ 50 साइट्स का डेटा आ रहा है। अगर पाकिस्तान के अंदर हजारों लैब्स,
काइंडली इसको एज अ लॉ कर दिया जाए कि नोटिफाइबल डिजीज है और नेशनल प्रोग्राम के पास डेली बेसिस पर ऑल HIV टेस्टिंग का रिकॉर्ड आए। तो मेरा ख्याल है कि हम बहुत जल्दी हमारा कवरेज जो 2 लाख से 2 लाख हमारा एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है और 24,000 ट्रीटमेंट पे है, इट्स अ ह्यूज गैप, इसको हम फिल कर लेंगे। दूसरा, द रोल ऑफ APL HIV, I think there is a visible conflict because of the funding constraints between the community-based organizations, the Nayi Zindagi and APL HIV. I think we need to revamp the community-based organization को देखना है कि ये फंडिंग के लिए काम कर रहे हैं, ये कॉज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अब हम सब लोग यहाँ पे जो बैठे हैं 20 वक्त, हम काम करें अपने वीकेंड में पाकिस्तान इंडिया का मैच छोड़कर, हम एक कॉज के लिए बैठे हैं। आई एम सॉरी, most of the CBOs, NGOs in Pakistan, I'm sorry for my apologies, कि उनका मुतमईन नजर जो है कि कौन सा डोनर क्या फंड कर रहा है, एजुकेशन कर रहा है, HIV कर रहा है। आई थिंक हमें फंडिंग के बियॉन्ड सोचना है, हमारा ये इशू है या नहीं है। अगर हेप्सी हमारा इशू है तो व्हाई नॉट HIV। थैंक यू। थैंक यू जी। सो दूसरे और डिजीज प्रोग्राम्स का भी यही है। अच्छा, सिर्फ ये जैसे ब्लड बैंक्स का कह रहे हैं डॉक्टर उमैर, बड़े बड़े सिस्टम्स जैसे AKU है, उसके कलेक्शन पॉइंट्स इतने सारे, उसी तरह शौकत खानम, इसी तरह चुगताई लैब, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनके बहुत सारे कलेक्शन पॉइंट्स हैं। उनसे भी आप डेटा नहीं कलेक्ट कर रहे, किसी किस्म का डेटा नहीं सबमिट करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनको उनसे कहा ही नहीं। मैडम प्रोमिसेस नहीं दे रहे। आई एम सॉरी, पंजाब ने 5 साल में MAS पे एक सिंगल एंट्री नहीं की। सो अगर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं दे रहा तो हाउ कैन आई आस्क AKU? AKU क्या, बाकी और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनके पास बेतहाशा डेटा होता है, मुझे क्वेश्चन जी बुशरा, मुझे बताएं कि ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं विद दिस होल थिंग बीइंग जस्ट गवर्नमेंट फंडेड, डू यू सी एनी फ्यूचर एंडेवर टू चेंज फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर? आपको लगता है कि दैट हैज टू बी डन, या उसमें उसके अपने चैलेंजेस होंगे? चैलेंजेस तो होंगे। देखिए, एक चीज़ जो मैंने देखी है, क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट के साथ ये लास्ट 6 मंथ्स में ही काम किया है, काम तो हो सकता है अगर करना चाहें तो, लेकिन आपको के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक्स बहुत सारे होते हैं। एंड देन देयर आर माफियाज जो कि बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कोई भी चीज़ मटीरियलाइज नहीं होने देते, वो फंड्स को डाइवर्ट करके अपनी तरफ ले जाते हैं। सो फंड्स आर बीइंग साइफन्ड ऑफ, डाइवर्टेड। अब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस का भी यही है कि आप अच्छी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एथिकल प्रैक्टिसेस भी होंगी, वो कहाँ से लाएंगे? अब इंडस का देख लीजिए, विच इज़ वेरी सैड। इंडस के साथ ये हुआ कि फंड्स मिस अप्रोप्रिएट कर लिए उन्होंने, जिसकी वजह से TB का प्रोग्राम इंडस के पास से हट गया काफ़ी हद तक, ड्रग ससेप्टेबल TB वाला। बताइए, मतलब बहुत ही शानदार प्रोग्राम था वो, लेकिन गड़बड़ थी उसके अंदर। तो गवर्नमेंट सेक्टर खुद, डॉक्टर मिश्रा, मैडम मैं ऐड करूं, मैडम आपको ये भी बताना पड़ेगा कि सरकार से ग्लोबल फंड ने 10 साल बाद HIV हमसे ले लिया है। 100% फंडिंग प्राइवेट सेक्टर के पास जा रही है, और रतो देरो जैसा कोई खुदा ना खास्ता आउटब्रेक हुआ, विच इज इमिनेंट। आई एम सॉरी विद माय UNDP कोलीग्स, मैं भी शायद UNDP ज्वाइन कर लूं। द इशू इज के UN एजेंसीज के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वो कोविड की फंडिंग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो रतो देरो जैसे रिस्पॉन्स के लिए सरकार गायब हो गई है। सरकार ने एक पैसा नहीं रखा HIV के लिए। आई एम सॉरी, नॉट अ सिंगल रुपी। 100% ARVs एंड डायग्नोस्टिक्स आर सपोर्टेड बाय ग्लोबल फंड। तो जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस डिजीज को ओन नहीं करेगी, आई एम सॉरी, देयर इज अ लैक ऑफ ओनरशिप। या तो हम लोग इनकॉम्पिटेंट है, हम बता नहीं पाए कि HIV इशू है। जिस मुल्क में HCV का इतना बड़ा बर्डन है, व्हाई नॉट? तो मैडम बुशरा हमारा वाहिद वोट है। HCV कंट्रोल इज आल्सो अ नाइटमेयर। HCV कंट्रोल के लिए भी जो एफर्ट्स हो रहे हैं, दे आर शेमफुल। मैडम क्या अच्छा है ये बता दें। गुफ्तगू को यहीं पे क्या अच्छा है, जो अच्छा है वो बता दें। चलें। And also just to add that कि लाइकाना वाला outbreak तो is one because of the involvement of children and the huge numbers. That's why it achieved both domestic and international attention. But uske alawa, in the last 10 years, there's been multiple outbreaks of HIV across the country. Some of them have received media attention and others have not. So Laikana is just the tip of the iceberg. It's, there's a lot more that is happening. Some gets, a little bit of attention at the provincial level. The others are completely not even investigated at all.
जी आई एम सॉरी बट लड़काना के बाद आप फॉलो अप देखें, दो अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस और अनस्क्रीन ब्लड बैंक्स आर स्टिल देयर, द कॉज इज देयर, तो वी आर रिएक्शनरी। एक वाकया होता है, हम फौरन रिएक्ट करते हैं, उसके बाद फिर वापस वही। तो जब तक पॉलिसी लेवल पर एडवोकेसी, और मेरा ख्याल है कि आई एम अगेन रेफरिंग टू माय बॉस डॉक्टर बुशरा कि मैडम की लिंक है फेडरल गवर्नमेंट में भी और सिंध गवर्नमेंट में भी, हमें बैठ के एडवोकेसी करनी है उनको कि HIV पाकिस्तान में, पाकिस्तान इज अमंग 3 कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक जहां HIV एपिडेमिक बढ़ रही है। पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग थाईलैंड इट इज कंट्रोल्ड, बिकॉज वायरल लोड जब नॉन रिएक्टिव होगा उसके बाद इट इज, आपको पता है कि इट्स कंट्रोल। लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली विद कोविड और विद डेंगी राइट नाउ। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रिंगटोन चल रही है ब्रेस्ट कैंसर की। इस्लामाबाद हाईएस्ट नंबर ऑफ डेंगी केसेस रिपोर्ट कर रहा है डेली पे, इस्लामाबाद में आउटब्रेक है लाहौर में, और रिंगटोन चल रही है। तो मैडम बुशरा को मैं कहता हूँ रोजाना कि आप हमारा वोट है प्लीज। मैडम बुशरा की कैपेसिटीज आर क्वाइट लिमिटेड। I think I'm going to rest it here. May Allah grant us more influence and effectiveness, inshallah. I think our अपना merit का हमारा यही एक goal है, to get the right people to the conversation, and then hopefully those who care about this disease. I think at the end of the day, जहाँ funding के issues हैं, आपको you have to find people who can do things without अच्छे दिल से और with an open mind and who care for this cause. If you can get those people together, I think you will create more power in this war. But चलें, हम तो दुआ ही कर सकते हैं. But everybody have a good night and Assalamu alaikum. Thank you for being here. Thank you very much everyone for joining, and special thanks to Saima and Hamad for moderating today, and Bushra, Umair, and Raheel, Mr. Tayyab, and Monali. Everyone, thank you very much. Thank you so much. Thank you very much, madam. Thank you so much. Assalamu alaikum. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. Bye bye.